Hi and welcome everyone. We are live again. So, welcome back to this amazing platform of QT learning. Right? I hope I'm audible to all of you. Right? Just let me know in the live chat. Am I audible to all of you? Just let me know in the live chat. Am I audible? Okay. So let's start. Welcome all of you to this amazing platform of QT learning. Okay. And as of the last class, जहाँ पे हम बेसिकली इंटीग्रल्स पर डिस्कस कर रहे थे, एंड अगर आपने अभी तक लास्ट सेशन ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ एक बार ज्वाइन देख लेना. ठीक है. यू कैन फाइंड ऑल माय कंटेंट्स जो भी हमने अभी तक सेशंस लिए रखे हैं, राइट, जी मेंस और जी एडवांस के लिए. सो ये जो कंटेंट्स मैं जो पढ़ा रहा हूँ अभी, दिस कंटेंट्स आर बेसिकली यूजफुल फॉर स्पेशली स्टूडेंट्स हु आर बेसिकली इन क्लास 11 एंड क्लास 12, एंड जो आगे जो कमिंग जेई मेंस और एडवांस जो 2026 और 2027 के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये सेशंस काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं. ठीक है. तो हम स्पेसिफिकली टारगेट कर रहे हैं जेई मेंस और एडवांस को, एंड अलॉन्ग विद दैट वी आर ऑल्सो टारगेटिंग कि बोर्ड्स के लिए अलग सेशन होने वाला है. सो डोंट वरी. ओके. ड्यूरिंग द टाइम व्हेन यू आर गोइंग टू हैव योर सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन, उनके लिए हम अलग सेशंस भी रखेंगे. ठीक है. बट दिस पर्टिकुलर सेशंस आर बेसिकली टारगेटिंग फॉर दी स्पेशली द जेई मेंस एंड जेई एडवांस एग्जामिनेशन. तो चाहे आप क्लास 11 में हो, चाहे आप क्लास 12 पे हो, चाहे आप ड्रॉपर हो, कोई मैटर नहीं करता है. जस्ट यू नीड टू रिवाइज, जस्ट यू नीड टू बी कंसिस्टेंट एंड डिसिप्लिन. अगर आपको इस पर्टिकुलर चैनल से कुछ फ़ायदा लेना है तो डेफिनेटली आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा और हर दिन आपको होमवर्क और लेक्चर्स देखना पड़ेगा. राइट. तो जैसे हम क्लासेस में अभी तक अपने देखते आ रहे होंगे कि इंटीग्रल्स में हम काफ़ी सारा क्वेश्चन सॉल्व किए. राइट. हम पहले से कॉन्सेप्ट देख रहे थे, फिर कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम क्वेश्चंस भी डिस्कस कर रहे थे. राइट. So that is the way we basically proceed for any chapter. Okay. For maths, we basically the thing is like you once get to the concept, idea should be clear. Okay. Because based on that idea, you can solve any number of questions. Okay. So maths में concepts limited है, but questions can be infinite. ठीक है. तो इस चीज़ पे बात करेंगे. एंड अलॉन्ग विद दैट, अगर आप इंटरेस्टेड हो, इफ़ यू वांट टू डू वन ऑन वन सेल्फ स्टडी, ओके, वन ऑन वन पर्सनल ट्यूशन, यू कैन ऑलवेज ऑप्ट फॉर अस. ओके. एंड वी हैव ऑलरेडी स्टार्टिंग आवर न्यू लाइव ऑनलाइन क्लासेस. ओके. जहाँ पे हम बेसिकली वन ऑन वन ट्यूशन देते हैं, या फिर यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर क्लासेस वेयर वी हैव अ स्मॉल बैच ऑफ 20 to 25 स्टूडेंट्स. ओके. So if you want to get enrolled in those online courses, you can call us on this number 9833 ओके. जस्ट आप इस नंबर पे कॉल कीजिए, जस्ट टू गेट कॉन्टैक्ट, टू लेट अस बेसिकली कॉन्टैक्ट आवर टीम एंड और मी. ओके. एंड गेट मेंटरशिप. अगर आपको लगता है कि आप स्ट्रक हो चुके हो कहीं पे प्रिपरेशन में, आपको सही से प्रिपरेशन नहीं चल रहा है, देन डेफिनेटली यू कैन कॉन्टैक्ट अस एंड रीच आउट थ्रू दिस पर्टिकुलर नंबर. और अगर आपको लगता है कि बैचेस में कैसे पढ़ाया जाता है, आपको डेमो क्लास के लिए इनरोल करना है, डेफिनेटली जस्ट रीच अस ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर. ओके. एंड यू कैन ऑप्ट फॉर अ फ्री डेमो टू नो बेसिकली हम पढ़ाते कैसे. राइट. Anyways, so with this, you can also support our mission, and you can also contribute to our mission of basically providing free education over YouTube. So for that, you can always contribute to us, and this is our Google Pay or the Paytm or phone pay number. You can always contribute something to basically help our mission of making quality education affordable on this particular number. Okay. So इसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं. ठीक है. तो जैसे कि आपको पता होगा कि लास्ट क्लास में हम बेसिकली एक नया टॉपिक सीखे थे, जहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे कि कैसे आपको इनडायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन जो क्वेश्चन होता है ना, उसको कैसे करना पड़ता है. राइट. एंड उसके साथ साथ मैंने कुछ होमवर्क दिया था. राइट. आशा करता हूँ कि आपने होमवर्क्स को सॉल्व किया होगा, सीरियसली लिया होगा. ठीक है. अगर आपने होमवर्क को सॉल्व किया तो एक बार लाइव चैनल बता दो कि होमवर्क सॉल्व, एंड आंसर्स बता दो मेरे को एक बार, ताकि मुझे पता चले कि कितने बच्चे होमवर्क कर रहे हैं. ठीक है. ताकि मुझे पता चलेगा कि व्हाट आई एम एक्चुअली टीचिंग इज एक्चुअली हेल्पिंग और नॉट. ओके. नहीं तो इट डजेंट मैटर. राइट. क्योंकि अगर मैं क्वेश्चन देते जाऊंगा, फिर अगर तुम लोग सॉल्व नहीं करोगे तो पता नहीं चलेगा चैप्टर क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना होता है. राइट. सो ये ज़्यादा काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एक बार आपको सॉल्व करना आ जाए. राइट. एक बार क्वेश्चंस पे आप कमांड बन जाए ना, तब आपको और इजीनेस फील होने लगेगा. ठीक है. ओके. ठीक है. एक बार बता दो अब ये सॉल्व किया कि नहीं. ठीक है. जस्ट लेट मी नो इफ यू हैव सॉल्व इट और नॉट, और एल्स वी शुड प्रोसीड विद द नेक्स्ट टॉपिक. ओके. सो ओके. सो आशा करता हूँ कि आपने सॉल्व किया होगा. ठीक है. एंड अगर अभी तक आंसर नहीं आया तो प्लीज़ मुझे बता देना कि डाउट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन और डाउट इन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. आई विल डेफिनेटली डिस्कस द सॉल्यूशन अगेन विथ ऑल ऑफ यू. ठीक है. तो आगे बढ़ते सिलेबस में हम आगे बढ़ेंगे, और आगे हम बेसिकली सीखेंगे डिराइव सब्स्टिट्यूशन. राइट. डिराइव सब्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए? समटाइम्स इट्स वेरी यूजफुल टू राइट इंटीग्रल एज सम ऑफ टू रिलेटेड इंटीग्रल्स व्हिच कैन बी इवैल्यूएटेड बाय मेकिंग सुटेबल
सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। मान लो कभी कभी बार होता है ना कि जब हमारे पास इंटीग्रल्स देते हैं ना, उस पर्टिकुलर इंटीग्रल को डायरेक्टली सॉल्व नहीं किया जाता है, राइट। तो हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर इंटीग्रल को दो हिस्से में तोड़ने की कोशिश करते हैं, जिस जो पर्टिकुलर इंटीग्रल्स को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, जिसके बेसिस ऑफ सब्स्टिट्यूशन, राइट। So similarly, मैं अगर बात कर रहा था तो बेसिकली हम वी स्टार्टेड विद algebraic twins, right? So I will be talking a bit on the algebraic twins. Let us say I have integration of x 2x square upon x to the power 4 plus 1 dx, ठीक है। या फिर या फिर तो बेसिकली अगर तुम इस पर्टिकुलर फॉर्म को देखोगे ना, अगर तुम इस पर्टिकुलर फॉर्म को अगर एनालाइज करोगे, तो द बेस्ट थिंग दैट यू कैन फाइंड ऑफ दिस फॉर्म इज दैट यू कैन राइट द सेम एक्सप्रेशन एज x square plus 1 divided by x to the power 4 plus 1, then plus of x square minus 1 x square minus 1 divided by x to the power 4 plus 1, ठीक है। अब इस चीज़ को ऐसे तोड़ के भी लिख सकते हो, राइट। now the beautiful part of this writing is that the beautiful part is basically that when when you're basically going to integrate, you're going to integrate them individually, right? You're going to integrate them individually, and the best part is to solve this integral you just need to do a simple substitution. Before the substitution you just need to do something manipulation to make this as a form of a substitution integral. How are you going to do that? सिंपल सा तरीका है। अगर मान लो हम एक पार्ट ऑफ द इंटीग्रल को एनालाइज करते हैं, मान लो मैं डिनोमिनेटर से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ। सो इफ आई टेक एक्स स्क्वायर एज कॉमन, इट्स गोना बी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, राइट। तो हम क्या करेंगे, फिर एक्स स्क्वायर जो डिनोमिनेटर में है उसको हम डिवाइड कर देंगे, उसको उससे हम डिवाइड कर देंगे न्यूमिनेटर को, तो हमारे पास ये बनेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, राइट। अब जब ऐसे बन चुका है, नाउ इफ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर फॉर्म, इसको हम परफेक्ट स्क्वायर पे कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। व्हाट आई विल डू इज दैट आई विल राइट एक्स स्क्वायर -2 ना -2 क्यों लिखा, इसका भी कारण है, आई विल एक्सप्लेन। -2 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, राइट। इसको ऐसे लिखते हैं, एंड सिंस मैंने -2 सब्ट्रैक्ट किया है कोई पर्टिकुलर इक्वेशन से, सो आई हैव टू जस्ट ऐड इट, सो आई विल जस्ट ऐड इट अगेन, एंड दिस विल मेक द फॉर्म एज 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स एंड होल स्क्वायर ऑफ इट प्लस ऑफ 2, राइट, प्लस ऑफ 2। आपको पता है कि इस पर्टिकुलर फॉर्म मैंने क्यों बनाया। द रीजन इज बेसिकली I wanted to assume x minus 1 upon x as t. I simply wanted to assume, so x minus 1 upon x as t. So if you just simply assume this x minus 1 upon x as t, your simple result is going to be like, so if you take the differentiation on both the side, it's going to be just like 1 plus 1 upon x square dx is going to be like equal to dt, is going to be equal to dt. Simple. So जो आपको जब इस चीज़ को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, so if you take this part as t, then this is just simply as dt. So this particular form of integral now simply becomes to integration of dt upon t square plus 2. Simple. And this result is very simple. This basically is tan inverse of t upon root 2. Tan inverse of t upon root 2. Right? Is this clear? And there should be 1 upon root 2 as well, right? Right? आशा करता हूँ कि ये सबको समझ में आता होगा, right? So this is the reason why we need to understand कि how we also go on to derive the substitution. So what is basically given? We have been given the form of a simple form of a algebraic twin for yes, right? Similarly, मैं अगर ऐसे एक simple example और देता हूँ, for example, this was the first example that I wanted to discuss about, ठीक है। ऐसे मैं अगर कुछ और फॉर्म्स दिखाता हूँ इंटीग्रल्स का, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ऐसे फॉर्म ऑफ इंटीग्रल है कि मान लो यू हैव टू इंटीग्रेट 2 अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 dx। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 1। इससे क्या हो जाएगा, इससे हम फिर से इस इंटीग्रल को दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं, एंड देन वी अगेन गोइंग टू मेक इट एज द फॉर्म ऑफ अ substitution form, right? So again this will be like written as, so x square plus 1 divided by x to the power 4 plus 1, one form of the integral, minus integration of x square minus 1 dx whole divided by x to the power 4 plus 1, right? Is this clear to all of you? ठीक है। So this form of integrals are basically called as algebraic twins. Now similar to algebraic twin आपके पास trigonometric twins भी होता है, and I'm going to talk about them as well, right? एक algebraic twin जो basically आप क्वेश्चन में काफी बार देखोगे, that is basically, so you can also get integration of x 2x square divided by x to the power 4 plus 1 plus kx square, right? And then dx over here. So what you can do, you can also express this one form of like using this expression, right? यहाँ पे एक बार क्या करो, x स्क्वायर दे रहा है ना, kx स्क्वायर, so आपको ट्राई करो k प्लस 2x स्क्वायर एंड देन माइनस 2x स्क्वायर, ऐसे करके भी आप एल्जेब्रिक ट्विन बना सकते हो, राइट?
सिमिलरली काफ़ी बार क्वेश्चन में ऐसे भी एग्जांपल दिखेंगे कि हैव अलजेब्रिक ट्विन लाइक 2 अपॉन एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। इसको भी बनाना काफ़ी ईजी है, राइट। इसको भी आप बना सकते हो, लाइक यू टेक एक्स स्क्वायर एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1 एंड देन द सेकेंड टाइम यू टेक एक्स स्क्वायर एक्स टू दी पावर 4 माइनस 1 एंड देन यू सब्ट्रैक्ट द बोथ, फिर भी अब बन जाएगा, राइट। This is a way you have to make basically algebraic twins. So you just have to think of how can evaluate this integral by expressing these two related integrals in some terms of two summation. आशा करता हूँ कि समझ में आता होगा, राइट। एक बार हाँ या ना बता दो लाइव चैट में, क्या ये चीज़ समझ में आती है? क्या ये चीज़ सबको समझ में आती है? एक बार हाँ या ना बता दो, एक बार हाँ या ना बता दो। ओके, just let me know if this things are clear or not. Is this thing clear to all of you? Just let me know once. Okay, is this clear or not? फिर हम आगे बढ़ते हैं and we will discuss about trigonometric twins. Okay, so let's now discuss about trigonometric twins. Okay, similar to algebraic twin, we also have trigonometric twins. Okay, so similar to algebraic twins, we also have trigonometric twins, and they're basically like, so trigonometric twins, मान लो मैं simple example देता हूँ. If we have integration of square root of tan x, right? Now I remember some of the students were asking this integration in some of my first or initial junior beginning classes, right? And I said them have patience. Definitely going to discuss about it. So the time has come now. We're going to discuss about the solution of this kind of integral, right? Similarly, आपको मान लो आपको इंटीग्रेशन दे देगा कि स्क्वायर रूट ऑफ cot x, right? So इस टाइप ऑफ फॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स को हम बोलते हैं बेसिकली algebraic twins. And the method of evaluating this integral I will teach you in just a minute, okay? And also if you see integral of 1 upon sin to the power 4x plus cos to the power 4x, okay, and dx, या फिर आपके पास ऐसा का इंटीग्रल आ गया कि 1 अपॉन साइन टू द पावर 6 है ना, ये वाला जो इंटीग्रल है ना 1 अपॉन साइन टू द पावर 6x प्लस कॉस टू द पावर 6, ये बोर्ड्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है। ये बोर्ड्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी इसका सोल्यूशन दे रखा है, राइट। ओके, और या फिर आपको ऐसा भी इंटीग्रल मिल सकता है कि वेयर यू हैव प्लस माइनस साइन एक्स प्लस माइनस कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाई ए प्लस बी साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है। तो इस टाइप्स ऑफ फॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स को हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक ट्विंस, ठीक है। आते सीखते इसको कैसे सॉल्व कैसे करें, राइट। So if we look at this form of integral, before we start to discuss about the solution of this integral, let me quickly discuss कि what if you have an integral of from, let us say I simply give you integral of a same form of a form, okay, I give you an integral of form like integration of function of x plus 1 upon x, and then I multiply it with 1 minus 1 upon x square. The best part of doing this form of integral is basically when you assume x plus 1 upon x as t, you simply get 1 minus 1 x square as simple as dt, right? So if you assume this as t, then the part 1 minus 1 upon x square 1 upon x square dx is equal to dt, right? So that is the best part of having this form of integrals, right? So that is the best part of having this form of integral. So let us try to solve some questions, and through questions we will try to understand how you try to evaluate this integrals, right? So let me start with the first example. So let me take this question, okay? So let me just take this question and let me start with that integral. So let me say I have to integrate square root of square root of tan x, and let us see how we can integrate or evaluate this expression, right? So before we start, let me first of all assume tan x as some variable t. Let me first of all assume tan x as some variable as t, right? So or maybe it will better if we assume as t square, because तब हमारे पास क्या हो जाएगा कि स्क्वायर रूट ऑफ tan x है ना, तो हम t स्क्वायर assume करेंगे तो t बन जाएगा, राइट। तो दैट इज एडवांटेज, ठीक है। नाउ इफ यू जस्ट differentiate both this side, if you just differentiate both this side, we're gonna have secant square x dx is gonna be 2t dt is gonna be simply equal to 2t dt, right? Is this clear? And the best part is that secant square x को हम फिर से ऐसे लिख सकते हैं, it is basically nothing but 1 plus tan square x. It is nothing but 1 plus tan square x dx, which is equal to 2t dt, and tan square x can be written as 1 plus t to the power 4, 1 plus t to the power 4 dx is equal to 2t dt, and therefore I can write dx over here as 2t upon
1 plus 1 plus e to the power 4 dt. So the best part of getting this substitution is that we can directly substitute dx over here and make this integration of the form of t. So this will be t into 2t dt divided by t to the power 4 plus 1, which is nothing but the same form of integral that you see that I converted a simple trigonometric twins into a question of simple algebraic twins. So this becomes a question of 2t square 2e square upon t to the power 4 plus 1 dt, and I have already discussed how to solve this integral, right? So from here you can take on, right? I hope this is clear. I hope this is clear. Please let me know in the live chat. Hi Madhu. Hi Madhu. Is this clear to you Madhu? क्लास में कोई है? क्या फर्क पड़ता है क्लास में कोई है या नहीं है? इज दिस क्लियर टू यू? जस्ट लेट मी नो. क्या तुम्हें समझ में आता है ये सब चीज़ें? कोई डाउट है तो बताओ. ओके, जस्ट लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस. जस्ट लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस. राजकुमार मीना भी कौन सी क्लास ले रहे क्लास के लिया है? आई कांट अंडरस्टैंड योर क्वेश्चंस. राजकुमार मीना, कैन यू बी स्पेसिफिक? आई कांट अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन. Okay, is this clear to all of you? Is this part clear? एक बार हाँ या ना बताओ. अगर आप क्लास को फॉलो कर रहे हो तो प्लीज़ एक बार हाँ या ना बताओ. देन आई कैन प्रोसीड विद द नेक्स्ट क्वेश्चंस. ओके, so let us solve an interesting integral problem. Okay, and that is a problem of algebraic twins. So let us see the question over here. So it is said that in the question we have to integrate 1 upon x to the power 4 plus 5x squared plus 1 dx, right? This is our integration question, right? Let us learn how to solve this integration question. So this particular integral over here, we can write this integral as, so what we can do is that we can express this integral as in form of some algebraic twins, and we can do it over here as, so integration of, so if you look at the integration, first of all what I will do is that I'll try to make a 2 in the numerator. Now हम 2 क्यों बनाएंगे? So the best part is basically to try to express in this particular denominator form and the substitution part of it, so that I can represent this integral as summation of two separate integrals, right? And the two separate integrals can be easily solved by simply using substitution, right? So if I just take if I divide by half, then I will write it half over 2 over here, and then it will become x to the power 4 plus 5x square plus 1 in the denominator, and then we have dx, and this is equals to 1 upon 2 integration of 1 upon 2 integration of, now this 2 can be written as 1 plus x square 1 plus x square divided by x to the power 4 plus 5x square plus 1, and then plus 1 minus x square 1 minus x square, and then we have divided by x to the power 4 plus 5x square plus 1, right? And this entire thing is integrated, right? So we are basically trying to separate this integral into two separate integrals, for which I can solve the solution by simply using substitution method, right? Or it's a simple question of algebraic twins. So this will be half will be taken outside, so half will be taken outside, right? And we have integration of, so if you just look at the first integral over there, and what I'm going to do again, I'm going to divide by 1 upon x square, right? So x square so divide करेंगे, so this will become 1 plus 1 upon x square dx whole divided by x square plus 5 plus 1 upon x square. Now since I have 1 plus x square, what I will try to form is like x minus 1 upon x. Okay, so if I just try to convert it into perfect square, this will become 1 minus 1 by x whole square, and the thing is like we have plus 5, right? So we need minus 2
we need -2 and then +2, so it will become +7, right? And then the other part of the integral is like half times of integration of 1 minus, so it's going to be like 1 minus 1 upon x square. Now since we have taken -1 as common, so this will become minus over here, and then whole divided by x square plus 5 plus 1 upon x square. Now since I see 1 minus 1 by x square, I will try to make it in form of x plus 1 upon x whole square of it, right? So this will become x plus 1 upon x whole square of it, and then since I made a whole square of +2, then I have to -2 also, right? So +5 minus 2 is basically going to be +3. I hope this is clear to all of you. I hope this particular step is clear to all of you, right? Now the simplest task is basically just to substitute back. So first of all, let us do the two substitutions. So first of all, I am assuming x minus 1 upon x as some variable t, and similarly over here I am assuming x plus 1 upon x as some variable u, right? So if we do that, so from here we will get 1 plus 1 upon x square dx as equals to dt, and this will become 1 plus, this will become 1 minus 1 upon x square dx as equals to du. Okay, so from here we can simplify the integral as 1 upon 2 integration of du upon u square plus 7 minus 1 upon 2 integration of, this should be dt, sorry, my bad, this should be dt t square, and this should be du, right? Du upon u square plus 3, right? So if you just simply, this is the simple form of integration, and half will be taken common, so I can take half as common, and it should be like 1 upon root 7 tan inverse of t upon root 7 minus tan 1 upon root 3 tan inverse of u upon root 3. Now we have to substitute back in the original form. So ultimately the answer is going to be like, so ultimately you're going to have the answer as 1 upon 2 is going to be in the common, and so 1 upon root 7 tan inverse of x minus 1 upon x whole divided by root 7 minus 1 upon root 3 tan inverse of, so we're going to have tan inverse of x plus 1 upon x whole divided by root 3, right? And then at the end plus some constant c. I hope this is clear to all of you, right? So we got the answer to our integral problem as the follows. आशा करता हूँ कि सबको समझ में आता होगा ये, ठीक है? एक बार हाँ या ना बता दो लाइव चैट में, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको समझ में आता होगा कि नहीं, ठीक है? Just let me know the live chat. Is this clear? Mr. Bai, you are IITian. IITian, yes, I'm an IITian. This is just for class 12, okay? This is just for class 12, and if you are interested in like integrals, you can also learn while being in class 11th as well. Okay, Rajkumar Meena, is this clear? Is this clear to all of you? एक बार हाँ या ना बताओ लाइव चैट में, ठीक है? क्या सबको समझ में आती है क्वेश्चंस? Is this question clear to all of you? Please let me know the live chat. Is this question clear or not? We shall proceed with the next questions then. जस्ट लेट मी नो दिस पार्ट इज क्लियर और नॉट. बस आप एक काम करो, बस कॉन्सेप्ट्स को समझो, ठीक है? क्योंकि दिस काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी वेरी यूजफुल, एंड एग्जाम्स में आप काफ़ी बार ऐसे टाइप का क्वेश्चन भी देखोगे, ठीक है? सो जस्ट लर्न द मेथड, ओके ओके. सो जस्ट लर्न द मेथड. सिंपल फॉर्म है, जब भी आपको इंटीग्रेशन ऐसे दिखे ना, एलजेब्रिक इक्वेशंस वाला इंटीग्रल देखे जहाँ पे x टू द पावर 4 नीचे आ रहा है, इन द डिनोमिनेटर इज लाइक x टू द पावर 4 एंड इन द न्यूमरेटर इज लाइक x स्क्वायर. सो क्या करो, बस x स्क्वायर का कॉमन लो एंड ट्राई टू मेक इट ऑफ द फॉर्म ऑफ सिंपल, ट्राई टू मेक इट ऑफ फॉर्म ऑफ f of x plus 1 upon x, and then just multiply with 1 minus 1 upon x square, 1 upon x square dx. Just you have to assume this as t, and this will simply become dt. Okay, so this is our step that we need to follow, and we have to just follow these steps. सर क्या आप फंक्शन रिलेशन करवा सकते हो? आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड फंक्शंस एंड रिलेशन ऑन दिस चैनल, ओके? एक बार चैनल को देख लो पहले, ठीक है? एक बार चैनल को फिर से एक बार देख लो, ठीक है? अगर आप प्लेलिस्ट जाके देखोगे तो सबसे स्टार्टिंग में हमने ऑलरेडी फंक्शन से स्टार्ट किया था, राइट? एंड रही बात सेट्स और रिलेशंस की, तो आई एम डेफिनेटली गोइंग टू टेक सेट्स, ओके?
मेरा प्लान्स भी है ऐसे सेट्स और रिलेशन को स्पेसिफिकली टारगेट करके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराना, क्योंकि सेट्स और रिलेशन से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं राइट जेईई मेंस में। ओके, सो आई एम डेफिनेटली गोइंग टू टारगेट दोज क्वेश्चंस एज वेल। ठीक है, सो स्टे ट्यून फॉर दैट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू चैनल। ओके, मुझे लगता है कि आप नया हो, अयन बनर्जी, आई थिंक यू आर न्यू टू दिस चैनल, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू चैनल एंड हिट द बेल आइकन। ठीक है, एंड वी हैव बीन टेकिंग क्लासेस फ्रॉम लॉट back of time, right? I have been taking classes like from month of May, okay, जब हम basically सीरीज को चालू किए थे, right? We started the series especially for the JEE mains and advanced 2026, okay, okay, and it's not only maths। अब देख पा रहे हो कि चैनल पे हम केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी भी कंटेंट्स डाल रहे हैं, राइट? फॉर नीट एस्पिरेंट्स द बायोलॉजी इज बेसिकली ऑल्सो क्रिटिकल पार्ट, उसके लिए भी आपको लेक्चर्स मिल रहा होगा। एंड for JEE aspirants, you can follow the chemistry lectures and the physics lectures that is also basically covered on this channel. Okay, you are also from Kharagpur. Very good. Good to see you, and that you are also from Kharagpur. Okay, so questions, anyone? Any questions in this problem? Please let me know if you have any questions, or you can proceed with the next problems otherwise. Okay, so if you don't have any questions, so let me give you some homework problems. Okay, so let me give you some homework problems to practice, because in integration it's all about practice. Okay, the more you practice, the more better you're going to become. Okay, so please take some practice questions and try to solve them, okay, at your home. So the first integral problem that I'm going to give you as a homework is like integration of x square minus 1 whole divided by x to the power 4 plus 3x square plus 1, 3x square plus 1, and then multiplied with tan inverse of x plus 1 upon x, tan inverse of x plus 1 upon x dx. That is our first problem. That is your first problem, right? And the second problem we're gonna have is that let's say I ask you the simple integration. This is something that I want to ask you out of the box. So it's a simple integration like in greatest integer of x, and then take the fractional part of it, okay, and then take the fractional part of it, and then again take a fractional part of it. So fractional part of fractional part, okay. So let me write over here. This bracket denotes the greatest integer function, that is GIF in short form, and this bracket, curly bracket, denotes the functional part function. So FPF, okay, functional part function, right? I hope this is clear, right? I hope this is clear. Okay, so these are the two questions that you need to try out as a homework problem, just as of the type 1 form of integral, where you're basically discussing the algebraic twins and the trigonometric twins. Okay, so let's now jump in and learn the other form, the other types of integrals, that is basically type 2 integrals. Okay, so I generally classify these kinds of integrals type 2 integrals in the Dirac substitution. Okay, so you'll be basically having some integration of special functions or irrational functions. Okay, so integrals of special, so you have integrals of special irrational algebraic function. Okay, so you're gonna have some special irrational algebraic functions, okay, algebraic functions to integrate in these kinds of problems. Okay, so integrals of special irrational algebraic functions. Okay, so let us see how we can go on integrating this. Okay, so in this case we're going to discuss about the four integrals, which is of the form of, so let us say I have a form of integral where it is q of x divided by square root of p of x. Okay, or maybe we can also have integrals like we have to make it irrational. So let us say I have a form of integral like phi of x and then some form of p square root of q, p square root of q of x, where p and q are both polynomials. Okay, so p and q are polynomials, okay, are polynomial functions, okay, of x, okay, polynomial of x, okay, polynomials of x. Okay, is this clear? Polynomial of x. Okay, so first of all let us learn about this first form of integral, that is if we have integral of phi of x divided by p square root of q, p square root of q dx, right, where p and q are, first of all let us say p and q are both linear. Okay, where we both have p and q as linear of x.
Okay, both p and q are just simply linear functions, okay, or linear polynomials of x. Then how we solve these integrals? Okay, so in order to solve this integral, the simple step is basically just to put q as simply equal to t square. Just you put q as t square and your integral is done, and your integral is simply done. So let us say if I take an integral to evaluate, is that let us say I have integral of 1 upon ax plus b multiplied with square root of cx plus d. Okay, and then we have dx over here. So simple step that you need to follow is that just assume cx plus d, as t square. Just assume cx plus d as t square. And once you do that, you will be able to solve this kinds of problems. So let me take an example to illustrate the saying. So let us say I have a question of integral where I have to integrate 1 upon x plus 1. Let us say 1 upon x plus 1 and square root of x minus 2 and square root of x minus 2. Let us say I have to integrate this kind of expression. So as you can see, it's just both of them are linear. So simple step is that whatever is inside the square root, you just have to assume that as equals to t square. Just assume that as equals to t square. So if you just assume this, so from this, what you can do is that if you just differentiate both the sides, so dx is going to become equal to 2t dt. So therefore, this form of integral is going to become equal to, so dx is basically 2t dt and divided by, so x plus 1 is going to be equal to, so x plus 1 from here is going to be equals to t square plus 3. So t square plus 3 over here, and then we have t over here, right? So this form of integral will become simply equal to, so this is basically equals to 2 will come outside, it's dt upon t square plus 3. Simple integral, right? And we can solve this in 1 minute. The answer is basically like 2 upon root 3 tan inverse of t upon root 3 plus some constant c. And our ultimate job is to basically get it back to the original form. So 2 upon root 3 tan inverse of, so x minus 2 square root of x minus 2 divided by square root of 3 and plus some constant c. I hope this is clear to all of you. एक बार हाँ या ना बता दो, ठीक है? Is this clear to all of you? Is this clear to all of you? Is this questions clear? Is this question clear to all of you? ओके, सो जब भी आपको ऐसा टाइप का स्पेशल इरेशनल फंक्शन दिखे और जब भी आपको p एंड q और बोथ आर लीनियर फंक्शन दिखे, दैट सिंपल स्टेप इज जस्ट टू एज्यूम द स्क्वायर रूट टर्म. स्क्वायर रूट के अंदर जो भी टर्म है उसको t स्क्वायर एज्यूम करना है, राइट? So this is where we are basically going to stop today, and we have seen a lot about different types of derived associations. And our next class we are going to discuss about कि मान लो either of p and q becomes a higher order polynomial. Let us say we will talk about the second part. What if we have integral of like 1 upon ax square plus bx plus c? If we have integral like ax square plus bx plus c, x square plus bx plus c, and then square root of dx plus e, and then square root of dx plus e. अगर हमारे पास ऐसा कुछ इंटीग्रल है, then how we solve for it? Okay, so how we solve for it? Again, we're going to learn about this. Okay, and also our next integral, what we have to also learn about is that मान लो हमारे पास ऐसे इंटीग्रल आ गया. For example, we have integral like dx upon ax plus b, and then square root of cx square dx plus e. Okay, and we have this kinds of integral, right? So that is our third part that we need to learn about. And also the fourth part is that what if both of the functions are basically a second order function, like we have dx square plus e, uh, and square root of let us say I have ax square plus b. तो ऐसा फॉर्म ऑफ इंटीग्रल को सॉल्व करने का जो तरीका होता है, हम सारे सॉल्व करने का तरीका सीखेंगे. एंड दीज आर द 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटीग्रल्स जो कई बार क्वेश्चंस में दिक्कत दे देते हैं कि हम सॉल्व नहीं कर पाते. एंड दीज आर द स्पेशल टाइप्स ऑफ इरेशनल फंक्शन दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ वी कैन सॉल्व दिस काइंड्स ऑफ क्वेश्चन. ओके, आशा करता हूँ कि आपको इस क्लास से कुछ सीखने को मिला होगा, राइट? एंड वी आर डेफिनेटली गोइंग टू डिस्कस कि अगर आपके पास ऐसा फॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स आ जाए तो कैसे सॉल्व करोगे, एस फॉर्म ऑफ इंटीग्रल आ जाए तो कैसे सॉल्व करोगे, एंड द लास्ट वन
of this particular form, तो कैसे solve करोगे, right? Each of these parts have special substitution and that you need to understand and keep remember once you are basically solving questions. So once you solve more and more questions, these all things gonna be embedded in your mind. Okay. Okay. So is this clear to all of you? Is this videos clear to all of you? If this lecture is clear to all of you, please let me know. Okay, एक बार thumbs up या फिर yes or no बता दो. Is this lecture is clear to all of you? Was the question clear? Was the question clear to all of you? Okay, so with this I would like to end our class over here. Okay, and this was pretty much about the today's discussion on the derived substitution, and we are basically left out with other two more types of derived substitution forms. Okay, so we're going to definitely look into the derived substitution of different other forms as well. Okay, and we're also going to discuss about the reduction formula as well. Okay, and that's where we are going to definitely end our chapter. Okay, so we're going to have two more topics also, like Euler substitution and reduction formula, and that is where we're going to end our chapter of indefinite integrals. Okay, so this is a bigger chapter, so we need a lot of lectures to finish it, and once the chapter is finished, I'm going to definitely take up a series of question practice on integrals. Okay, and those sessions are definitely going to be on the videos. Okay, so I'm planning of making a lot of videos for question solving so that you can get to solve a lot of questions and learn from the solution as well. Okay, so those sessions might not be live or live classes, so those sessions might be recorded sessions as well. Okay, बट आपको सारे के सारे सेशंस देखने हैं, राइट? सो इफ यू वांट टू डू वेल इन योर इंटीग्रेशन पार्ट, एंड स्पेशली अगर आप इंटीग्रेशन में ज़्यादा प्रैक्टिस कमांड करते हो ना, डेफिनेटली ये चैप्टर ऐसा है कि करते करते प्रैक्टिस करते करते जितना प्रैक्टिस करेगा उतना ज़्यादा इंप्रूव करते जाएगा, राइट? सो दिस समथिंग लाइक दैट. सो द मोर यू प्रैक्टिस द मोर बेटर यू गोइंग टू बिकम एट इट. ओके, so with this I would like to end our class over here. Thank you for